Very good evening, friends, and welcome to my channel again. My name is Virender. I welcome all of you to my channel. It is समाधान ICS में आपका सभी को मैं स्वागत करता हूँ. Before starting this lecture, I have already informed you that we have started the series of Indian Constitution. We have started this important topic of evolution of Indian Constitution from this series, and we have completed our few important acts. Initially, we have started how the Portuguese came to India, and later on we have discovered that how and why Britishers came to India as per in this series of Indian Constitution, and how the evolution of Indian Constitution started with the imposition of important regulatory act 1773, in which we got few important things. And after that we have discussed the series of charter act. We have discussed a few important charter act. So previously we have discussed two important charter act, that's 1793 and 1813 charter act. I have already informed you like each and every charter act actually imposed in India within the selective year of 20, the gap of 20 years. Now we have discussed the like earlier we have discussed the charter act 1813. So this is the this era, this year is 1833, in which the next charter act, or we could say third charter act has been imposed. So let's see what's there in this charter act. Although, my dear students, this is very very important charter act, and number of questions has been asked directly, indirectly from this charter act in civil services, although in other exams also. In the preliminary of civil services, like many question directly has been asked from this charter act third. So it's very important for you people to be very focused in this particular video lecture, because it's a very important part of your this preparation if you are preparing for any exam. Let's see what's there in this charter act. First, the Governor General of Bengal serve as the Governor General of India. So the important post now has been given a vast parameter in India. So earlier that was only acclimated for Governor General of Bengal, but now it will remain as Governor General of India, and vest all civil and military control. So whatsoever the civil and military control there earlier into the hand of Governor General of Bengal only, or Governor General of Bombay only, or Madras only, now the whole control, whole empire control of the whole country must be there in a single person hand, and who hold the position of Governor General of India as per third charter act, or as per charter act 1833. And entire territorial area possessed by the England. So whatsoever the territory occurred by this Governor General of India, that is directly this Governor General of India would be directly reporting to the this British Crown. So the sentence is written, entire territorial area possessed by the England. So it is possessed by the England, and who is taking care in India for England? It's Governor General of England. So if Governor General is taking care of India in England, for whose behalf? That is for behalf of England. And who is the head of England? That may be the Queen or King. So entire India now under the crownship of England. And further, Lord William Bentinck was the first Governor General of India, who was appointed in 1833 as per third charter act. So this is very important information that you have to keep in mind. So first, that was the Governor General of Bengal, that was appointed in India from 1773 Regulating Act. Now the era has changed. The British government have decided something else, and they have given very important and immense power to Governor General of India, and whole territory of India is governed or under a manipulation of a single person who given the position of Governor General of India, and he must be reporting under the British Crown. After that, it deprived the power of Governor General of Bombay and Madras. This is very understood thing. If person who is holding a power of Governor General of India, and there were other person like Governor General of Madras or Bengal, or some whosoever is there, so it must be a very clear picture. If a person holding a hand a position of Governor General of India, another are Governor General of particular territory, so definitely those person holding a position of a Governor General of a particular territory must have a certainly low power. So definitely it deprived the power of Governor General of Bengal and Madras. Very important information, very important thing. What was there? The Governor General of India got exclusively legislative power to retain any act as a regulation, though it's a retrospective. See, what is the meaning of this sentence? It's very very important to understand this thing.
let's see an example. Any act has been passed in 1773. So act means that has been imposed in the rule book. But if I'll say something is a regulation, it's just a rule. It may be officially legal or can be challenged in a legal way, or it cannot be challenged in a legal way. There are n number of rules, like while we are walking on a road, we have to walk on a left or right side. We should not destroy this thing, we should not decay that thing. There are n number of rules, but there are few important acts or laws or acts can only be challenged in the court. But if I will say about the rules, as we are aware of the society, rules is there to be broken by the society itself. So rules are not very immense. If I will say, it's not have the although very big picture in the society, but act have that. If I will say in other words, rules are only small principles for the act, and act is the final picture of the rules. So whatsoever the act has been passed earlier, so this now the Governor General of India have this power from retrospective way. So it doesn't mean from 1833 and after that only, not like that. It have the now the Governor General had the power to change any previous act also in a retrospective way. So whatsoever act in past, in say 1773 Regulating Act or Pitt's India Act 1774 or first or second Charter Act, so whatsoever the act has been passed, now the Governor General of India have the power to make it as a regulation, or he can directly pass a resolution to make it as a only resolution, and further any amendment he would like to possess, he can make it as an act. इसको हिंदी में बड़ा स्पष्ट भाषा में समझाना चाहूंगा आप लोगों को। आज से पहले जो भी आज तक में कोई भी अगर इसी तरह का कोई एक्ट बनाया गया था, तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में ये ताकत थी, ये क्षमता थी, पावर थी। ये पहले वाले के सभी एक्ट को बदल के सिर्फ रेगुलेशन में लगा सकता था, बना सकता था। सिर्फ उनको रेगुलेशन के तौर पे ही ट्रीट किया जाएगा, उनमें से कोई भी एक्ट नहीं होगा, सिर्फ रेगुलेशन होंगे। रेगुलेशन का मतलब होता है कि रूल सभी रूल्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते लीगली, लेकिन सभी एक्ट्स को चैलेंज किया जा सकता है लीगली। रूल जो है वो माइनर है और एक्ट्स हैं जो मेजर है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में इंपॉर्टेंट ये पावर थी, जो एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में ही थी। वो इससे पहले के भी सभी एक्ट को रेगुलेशन में चेंज कर सकते हैं, यानी उसका मन करे तो किसी भी एक्ट को वो खत्म कर सकता है और किसी भी नए एक्ट को अपनी तरफ से इंपोज कर सकता है इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर थी। एंड लॉ मेड अंडर चार्टर एक्ट 3rd रिमेन एज एक्ट, और इस लॉ के अंडर में जो भी वो बनाएगा, कानून बनाएगा, इट विल रिमेन एज, वो ही फाइनल माने जाएंगे। इससे पहले के जो भी थे रेट्रोस्पेक्टिव में उसे कैंसिल भी किया जा सकता है, अगर सभी कैंसिल हो जाएंगे सिंगल एक रेजोल्यूशन से। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इंपॉर्टेंट पावर दे दी गई थी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। सो करंटली व्हाट इज देयर द पिक्चर? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 53, the president have the same power, the executive power of the president can definitely able to cancel any law and make it as a regulation or cancel a law totally, और like जो हो चुका है उसको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करंटली पूरी तरह से कैंसिल कर सकता है, टोटली खत्म कर सकता है, या जो लॉ है, जो एक्ट है, उसको सिर्फ एक रेगुलेशन बना के छोड़ सकता है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करूं तो देयर आर द लाइक थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल हमारे पास में अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट के अगर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, एफडीआई को लेके एक प्रेसिडेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पास किया था, दैट्स GAR एक्ट, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये एक्ट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा उस समय जो है पास किया गया था। आप एक बार इसको पढ़िएगा तो ये रेट्रोस्पेक्टिव का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वोडाफोन वगैरह का केस है ये। सो डू रीड दिस थिंग, ओके। But now the president have this power as per Article 53. Earlier this power possessed in the hand of Governor General of India. So as per this 1833, now the Governor General of India have the important power to change any act as a regulation. Okay, from the retrospective, पीछे से वो उसको regulation बना सकता है, and it ends services of East India Company as a commercial body, but serve as a administrative body. जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सर्विसेज दे रहे थे एज ए कमर्शियल बॉडी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ कमर्शियल बॉडी ट्रीट नहीं किया जाएगा, दे वुड बी ट्रीटेड एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। उनका काम सिर्फ
या रेवेन्यू वगैरह कमाना नहीं होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन की भी देखभाल करेंगे। और अगेन इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो देखभाल करने की रिपोर्टिंग होगी किसके हाथ में होगी? नाउ टोटल ऑपरेशन हेड इन द हैंड ऑफ हिज और हर मैजेस्टी, यानी कि जो राजा होंगे, रानी होंगे, उनके हाथ में, उनके हाइट्स के हाथ में, उन्हें आने वाले जो नेक्स्ट किंग और क्वीन है उनके हाथ में ये टोटल पावर दी जाएगी। सो एज पर दिस चार्टर एक्ट 1833 में इंपॉर्टेंट बात हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट अर्लियर वाज ओनली द कमर्शियल बॉडी, नाउ इट बिकेम अ administrative body, and whole administrative body has been governed by his or her majesty from England। तो ये भी पावर अब इंग्लैंड के पास में चलेगी। तो कमर्शियल पावर भी इंग्लैंड के पास चलेगी, लेजिस्लेटिव पावर, सिविल, मिलिट्री, सभी पावर भी डायरेक्ट क्राउनशिप के अंडर चलेगी। एंड क्राउनशिप हैव चेंज्ड द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड फर्दर इंट्रोड्यूस दिस एन ओपन कंपटीशन for civil services exam, and India should not be debarred from such competition, but from opposition from court of director holded such privilege to Indians। अब एक बात जो है इस एक्ट में बोली गई थी, 1833 चार्टर एक्ट में बोली गई थी कि आपसे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको एक एग्जाम पास करना होगा। उस एग्जाम पास करने के बाद में एनी पर्सन कैन बिकम सिविल सर्वेंट, इट मे बी इंग्लिश पर्सन, इट मे बी नॉन इंग्लिश पर्सन, इट कैन बी इंडियन पर्सन, बट बिकॉज अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 24 लोग थे, इंपॉर्टेंटली उन्होंने इसका अपोजिशन किया। जो बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दे नेग्लेक्टेड सच थिंग्स। उन्होंने बोला अगर ऐसा होगा सो वी वॉन्ट एंजॉय एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज फर्दर, हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमारी सारी प्रिविलेज खत्म हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इंपोजिशन इंडिया में लाने की कोशिश की थी उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन ये कभी भी पास नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज को एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के द्वारा कराने की बात की थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अपोजिशन की वजह से इसको कैंसिल करना पड़ा। सो ये प्रिविलेज इंडिया को उस समय नहीं मिल पाए, लेटर ऑन ये प्रिविलेज इंडिया को मिले। मैं आपको इस स्क्रीन के साथ में थोड़े समय के लिए छोड़ के जा रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ है, इट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो काइंडली नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। इफ यू हैव एनी डाउट in this particular video lecture, do ask me. This is very important, this Star Trek 1833, it's very important. Thank you so much.